Assalamu alaikum, hello and namaste. Welcome to the episode 19 of The Limelight. Today on the hot seat, I have a confident and smart person. Her name is Krutika Katrat. She is the co-founder at Oowomaniya.com. Welcome to The Limelight, Krutika. How are you doing today? I'm doing very well, Fareen. Thank you, and hello to all the audience of the Limelight. It's a pleasure talking to you all. It's lovely to have you on the show, dear. Thank you. Okay. So, Krutika, before we get into your journey with Oowomaniya, I want you to just give us a little glimpse of your personal life. So I'm a master's in biotechnology, and I come from an entrepreneur family. So I'm a second generation entrepreneur. I was pursuing my biotechnology. Along with that, I did my dissertation specialization in cancer biology and protein biochemistry. And I was working at Tata Memorial Center, TMC, in cancer biology division in a project with the Department of Science and Technology. And there I started my journey. I was in core research, and there I decided to do something which is more application based, where I could actually see the impact happening with my end users. So once I finished working at DMC, I started my journey with entrepreneurship at Oowomaniya in around 2013, and we did a lot of field research. In field of healthcare, since I come from a paramedical healthcare background, we did a couple of research. We did visit a couple of villages, and that's how we zeroed down on the solution we wanted to work on. That was interesting things you told about yourself, as that main factor will be in you that you are into entrepreneurship. Indeed, my family is. Okay. So may God give you all the success you deserve. Thank you so much. Thank you for that. You're welcome, dear. So I would like to know what ignited the idea of Oowomaniya. The audience of your show will be females. I would like to really raise this issue that how many women would keep themselves first, then their family. How many women do actually prioritize their own well-being and their own health? If they have to choose between their family's well-being or their issues and taking care of themselves, probably they'll keep themselves at the bottom. Am I right, Pari? Yeah. Yes, they will always prioritize, and it's with women who are anywhere, any part of the world, because we are nurturers, we are primary caretakers of our families, of our children, of our spouses, of our husbands. So somewhere I have always made this observation that women take care of everyone else, but when it comes to their own health, their own well-being, for what they want, they always prioritize it much later. And then there are a lot of other issues, like women's bodies are made very differently. They are very different from men's bodies. We have a reproductive system that is capable of giving rise to another life. But of course, that also comes with lots of their unique issues and concerns. And also there are a lot of myths and socio-cultural barriers attached to women's health, like something like menstruation, periods, जो इतनी normal, इतनी natural process है, biological process है, और उसके लिए सारे cultures में काफ़ी taboo है, और औरतों को उस period में काफ़ी impure माना जाता है. तो ये बहुत difficult चीज़ है. Pregnancy को लेके इतने questions होते हैं, इतने सवाल होते हैं लोगों के दिमाग में. So who is going to answer those questions? अब छोटे-छोटे questions ये जो होते हैं, doubts होते हैं, वो कहाँ जाके पूछेंगे? Will you ask your friends? Good enough. Will you ask your mom? Good enough. But what if they are not going to always pass across the right information or the correct scientific information? I've heard many women say कि आपको pregnancy के वक्त double खाना चाहिए, क्योंकि आपका baby है तो आपको double खाना चाहिए. No, आपको double नहीं खाना चाहिए, आपको एक balanced nutrition लेना चाहिए. So ये ऐसे काफ़ी सारे myths हैं हमारी society में, और इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम इसको
women's health को, like half of the earth, almost half of the earth's population is females, and we want to address their issues and their health problems, whether it's a physical health problem, emotional health problem, reproductive or intimate health problem. We want to address their problems and their questions related to menstruation, pregnancy, sexual health, breast care, fitness, psychological health, emotional health, relationships, child care, फिटनेस, डाइट, न्यूट्रिशन, इन सब पे हम उनके सवालों का जवाब देना चाहते हैं. उनको सारी सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करके देना चाहते हैं. सो दैट्स व्हाट आवर गोल इज. That was the bottom line of our thinking behind the concept. We as founders, our empathy related to these issues. That was the core behind Oowomaniya's concept. Why we chose to work in this field. Why we chose to have a startup in this field. It is a fantastic initiative you have taken, and also hats off to you and your co-founder for creating, such a platform called Oowomaniya. Yes. Thank you. Thank you so much. You're welcome, dear. So, if we go to the Oowomaniya site, what can we find? What are the primary things? Right. That's a really good question, Fareen, especially for your audience. Once you go to the website URL is www.oowomaniya.com. Oowomaniya is OOWOMANIYA. जिनके पास एंड्रॉयड ऐप है वो प्ले स्टोर में जाके भी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. सो ओवोमनिया में जाके आपको क्या मिलेगा? आप वेबसाइट पे लॉग इन करेंगे, आपको कोई भी अपनी हेल्थ रिलेटेड कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, तो आप अपना नाम बिना शेयर किए अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो हमारे पास काफ़ी प्राइवेट क्वेश्चंस आते हैं औरतों के, जहाँ पे वो अपने पीरियड्स के बारे में, सेक्स इश्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करती हैं, या अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में डिस्कस करती हैं. और वो कुछ क्वेश्चंस इतने प्राइवेट होते हैं कि वो उनको हेल्प तो चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, बट उनको अपना नाम शेयर नहीं करना क्योंकि वो प्रॉब्लम इतनी प्राइवेट है. सो इसलिए हमने एक अनोनिमिटी का फीचर दिया हुआ है जहाँ वो क्वेश्चन वेबसाइट पे होगा, लेकिन आपका नाम कहीं पे भी वेबसाइट पे या ऐप पे नहीं दिखाया जाएगा. सो इससे क्या होता है कि औरतों को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ, मैं यहाँ पे अपना सवाल पूछ सकती हूँ. और दूसरी एंड पे हमारे साथ डॉक्टर हैं, काउंसलर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, पीडियाट्रिशियंस, ये सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स वो क्वेश्चन को देखेंगे और उस पर अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देंगे. सो इसके अलावा फरीन, अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, और के सवाल पूछ सकते हैं. हम काफ़ी सारा ब्लॉग और कंटेंट डालते हैं हमारी वेबसाइट पे, काफ़ी आर्टिकल्स डालते हैं जहाँ पे एक्सपर्ट्स हेल्थ टिप्स देते हैं. दूसरी औरतें हैं जो उन्हीं की तरह औरतें हैं, उनके अपनी स्टोरीज. देयर वाज अ लेडी ऑन अ प्लेटफॉर्म जिन्होंने अपनी सिजेरियन की स्टोरी शेयर की थी. शी वॉज हैविंग लॉट ऑफ, वो डरी हुई थी कि उनसे नेचुरल डिलीवरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इतना दर्द वो सहन कर पाएंगी या नहीं. तो इसके चलते उन्होंने शी प्लान हर ओन सिजेरियन. तो अब हम कोई नहीं होते उनको सही या गलत बताने वाले, उनकी स्टोरी है, हम उनको वो शेयर करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे. वो स्टोरी पढ़ के ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनका खुद का सी सेक्शन हुआ होगा, जो ये स्टोरी से रिलेट कर सकती हैं. दे कैन रिलेट टू दैट एंग्जाइटी एंड दैट फियर, राइट. सो इस तरह से हमने ना ही हमारे वेंचर को ऑर्गेनिकली मार्केटिंग में हेल्प करता है, बट ऑल्सो बहुत सारी फीमेल्स हैं जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रही हैं. वो कम्युनिटी, अपने लिए कम्युनिटी ढूंढती हैं, उनको अपने लिए कम्युनिटी मिलती हैं जहाँ पे वो ऐसे ही दूसरी औरतों की स्टोरीज पढ़ सकते हैं, उससे इंस्पायर हो सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम डाइट पैकेज प्रोवाइड करते हैं. अगर किसी को PCOS, थायराइड या वेट लॉस, वेट गेन जैसा कोई इश्यू है तो उनको हेल्थ के हिसाब से हम डाइट प्लान्स प्रोवाइड करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू लॉट ऑफ ऑफलाइन वर्कशॉप्स एंड इवेंट्स. जैसे यहाँ अभी इंडिया में तो हम लोग ऑल अक्रॉस इंडिया हमारा प्रेजेंस है, तो हम
कंपनीज में उनके एम्प्लॉयज़ के साथ विमेन फ्रेंडली वर्क प्लेसेस कैसे बनाने चाहिए, उसमें कंपनीज को गाइड करते हैं। उनके साथ भी यही वर्कशॉप्स, मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे वर्कशॉप्स है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इंटीमेट हाइजीन, प्रेगनेंसी, ये सारे टॉपिक्स के रिलेटेड वी कंडक्ट लॉट ऑफ वर्कशॉप्स। सो बेसिकली फरीन, हमारा गोल ये है कि हम ओवोमानिया के थ्रू विमेंस हेल्थ के डोमेन में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और अवेयरनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये हमारा गोल है। ये जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया है जहाँ पे कोई भी लड़की या औरत जाके अपने क्वेश्चंस एनोनिमसली पूछ सकती है विदाउट बीइंग रिवील्ड, राइट, एंड देयर इज अ सेफ्टी एंड सिक्योर स्पेस टू डिस्कस, राइट। प्लस आपके पास डॉक्टर्स ऑन बोर्ड हैं, मेडिकली दे कैन गाइड एनी वुमेन और इफ दे हैव क्वेश्चन फॉर देयर फीमेल फ्रेंड्स और एनीबॉडी। तो Oowomaniya, as a co-founder, you're doing is a very good thing, and I wish you all the success for this Oowomaniya venture. Thank you so much, Fareen. Thank you. You're welcome, dear. So now, as an entrepreneur, everybody faces challenge. So, what were the challenges you faced in this journey? Of course, like any other female, I also had little resistance from my peers, क्योंकि जब मैंने अपनी entrepreneurship की जर्नी शुरू की थी जब मैं 23 साल की थी। अभी मैं 26 साल की हूँ। तो ऑफकोर्स जब आप बहुत यंग होते हो तो आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप एक अच्छा जॉब लेके अपनी फैमिली की कंपनी में, फैमिली बिजनेस में आप ज्वाइन हो जाएं, विच इज़ वंडरफुल। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, दैट्स ऑल्सो वंडरफुल। बट उस वक्त मुझे ऐसा था कि खुद का कंपनी, खुद का स्टार्टअप पे काम करना चाहिए, या फिर अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए, या कोई स्टेबल जॉब ले लेनी चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इतना आसान नहीं होता। मतलब पहले लोग बोलते थे, बट अब सिंस मैं इस डोमेन में हूँ मुझे पता है कि इट्स नॉट दैट ईजी। जितने आपके हाईज होंगे उतने आपके लोज भी होंगे, जितने दिन आपके अच्छे जाएंगे उतने उससे शायद ज़्यादा बुरे दिन भी आपको देखने पड़ सकते हैं। एंड वी हैव सीन ऑल दोज फेजेस विद आवर स्टार्टअप अप टिल नाउ। शायद इससे बहुत अच्छे देखेंगे, शायद इससे आगे जाके बुरे भी देख सकते हैं। वी आर ऑल मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज अल्टीमेटली जिस गोल से आपने कोई चीज़, कोई कंपनी स्टार्ट की है, या जो आपका पैशन है जिसे आप परस्यू करने के लिए कुछ कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या स्टार्टअप बना रहे हो, या किसी सोल्यूशन पे काम कर रहे हो, उसको आपको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी चैलेंज थी इनिशियली एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कि हम एग्जैक्टली क्या करें, किस फील्ड में जाए, स्टार्टअप करें ना करें इस एज में। सेकेंडली ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर वर्किंग इन विमेंस हेल्थ, सबको लगता था कि एक एनजीओ है, और हमको बहुत ही स्ट्रांगली डिफाइन करना पड़ता था कि डूड वी आर नॉट एन एनजीओ, वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमें कहीं से कोई ग्रांट नहीं मिलता, वी पे आवर ओन बिल्स, then we have to go out in the market and hunt for our own clients. So it is not that easy for us. So ये बहुत हमें इम्प्रेशन मिलती थी कि हाँ, फीमेल हेल्थ, अच्छा महिलाओं का हेल्थ, अच्छा ये तो एनजीओ ही होगा। तो लोग इसे ज़्यादा पहले सीरियसली नहीं लेते थे, ऑफ कोर्स बिकॉज औरतों को ही ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। तो औरतों की हेल्थ पे अगर आप बात करोगे तो क्यों कोई इतना सीरियसली लेगा? You know, that kind of mentality we always have to fight out. So वो था initial phase में हमें हमारा जो concept है, like women do not have this habit of asking questions online. तो पूरा एक behavioral change था जो हम लाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे पिछले 1-2 साल से औरतें ज़्यादा ऑनलाइन आना शुरू हो गई हैं। वो they feel more comfortable कि सिर्फ अपने फोटोज ना शेयर करते हुए अपने प्रॉब्लम्स, अपने व्यूज भी अब वो शेयर करने लगी हैं धीरे धीरे। दैट इज अ वेलकमिंग चेंज कि हाँ, औरतें सिर्फ यहाँ पे अपने फोटोज अपलोड करने, अपने बच्चों के फोटोज अपलोड करने नहीं आती। दे मीन बिजनेस, ओके, दे मीन टू टॉक ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू देम। सो ये चीज़ पहले हमें वो ट्रस्ट लेवल बढ़ाने में भी हमें इनिशियली प्रॉब्लम हुई कि औरतें अगर प्लेटफॉर्म पे आए तो उनको ये ट्रस्ट लेवल फील हो
कि हाँ मैं यहाँ पे सवाल पूछ सकती हूँ। अब ऐसा होता है कि अब सामने से लोग आते हैं, गूगल पे सर्च करके लोग वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं और सवाल पूछ रहे हैं। पिछले 3 साल में हमने वहां से लेके यहाँ तक का जो सफर काटा है, इट हैज बीन गुड इनफ अप टिल नाउ। बट हाँ, इनिशियली ये चैलेंजेस होते हैं कि आपको अपना फैमिली है, अपना ग्रुप है, अपना पीयर प्रेशर है, उसको आपको कैसे आप ध्यान में रखने के बावजूद आप अपने लिए आप काम करते हैं जो आप सच में करना चाहते हैं। सो यू हैव टू फाइट इट आउट इन योर माइंड फर्स्ट। ऑल्सो आपको ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज आप एक कंपनी खोल रहे हो या आप एक बिजनेस कर रहे हो तो ये हर बार अच्छा नहीं होने वाला। तो इफ यू आर एन ओनर और इफ यू आर अ co-founder or if you are a boss of a firm, it's not always going to be rosy. You are going to be more responsible for things, and sometimes that can be stressful. Sometimes it's like why I have to manage all this, but it will happen. It will happen nicely once you take it seriously. सब हो जाएगा. You just have to stick there. You shouldn't be giving up. हर बार जब आपका गिव अप करने का मन करे, आपको याद करना है कि आपने क्यों शुरू किया था, आपने क्यों काम करना शुरू किया था। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक दिस इज प्रीटी मच, मतलब ज़्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए मैं ये सारे चैलेंजेस बताना चाहूँगी। Okay. That is true. So I have another question. What is your biggest strength? That's a good question. I don't know how to answer it though. I think my biggest strength is that I'm very stubborn. So I think that has really either helped me also, that has put me in problems also. Okay. Very stubborn in terms of जो मुझे चाहिए, I really just go and get it. If I really want something, and this especially helps me when I'm making sales for the company, that your friends will say कि हाँ अभी नहीं, बाद में करते हैं, ये करते हैं, let's talk later. And I never quite a go-getter. Okay. That's a really good quality, being stubborn, because until and unless we are not stubborn to get that something, we won't get it. Absolutely. Okay. Kritika, I have a rapid fire round for you here. Okay. So I'll be asking you a few questions. Are you ready? Yes, I'm ready. Who is your favorite superhero? Batman. Okay. What is that one thing you have never done? There are a lot of things that I have not done, and that is one of them which I really regret, is just leaving out of nowhere and backpacking and without any money or any destination in mind. Just taking off. That I have never done, and I really want to. Okay, that's nice. Yeah. What's your favorite book? My favorite book is I have two favorite books. One is Rich Dad Poor Dad, and second one is this one, the Fountainhead. Okay, that's interesting. Okay, what's your favorite mobile app? Favorite mobile app? Okay, my favorite mobile app would be, I think, WhatsApp and my period calendar. Okay. What's your favorite destination? My favorite destination is, I think, going to a Europe tour. You know, because I've been to Europe, like parts of it, but I've not really seen the Scandinavian part. So probably Europe would be somewhere I would like to just, again, as I said, backpack and go to the hostels and staying in Airbnb and travel on a budget. That's nice. So that was the end of the rapid fire round. Okay, thanks. Okay, we have reached the last segment of the show where we ask for your advice. So please give in your precious advice to our listeners. Okay, so dear ladies, this is the advice which I want to give you. अपना खुद का ख्याल रखिए. आप जैसे सबका ख्याल रखती हैं, आप अपने आप का ख्याल रखिए, वो भी बहुत ज़रूरी है. एंड सेकेंडली, प्लीज़ ओवोमनिया का ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर वेबसाइट पे जाइए और सवाल पूछिए या आपके डाउट्स चेक करिए, या आपकी जैसी ही दूसरी औरतें हैं उनकी स्टोरीज पढ़ के इंस्पिरेशन लीजिए. एंड बस यही एडवाइस, और कुछ नहीं. जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड
rock yourselves, be awesome. That was incredible advice, Kritika, and thank you so much for taking Yes. out time and giving this interview with us, because I know you have a very busy schedule. In spite of that, you have arranged time and given us a talk on Okay. Oowomaniya and explained the importance of a woman's health. It comes first. Thank you so much. Right. Right. Thank you so much, Fareen, again for having me on your show, on your blog. And I really enjoyed speaking to you all. Lot of love from Team Oowomaniya and myself. And all the best. And I hope whatever we have discussed, आप उसको at least एक बार थोड़ा सा seriously लें और बस अपना ध्यान रखें. Yes, thank you so much, Kritika. Okay, listeners, if you want to go to Oowomaniya, you just have to type in www.oowomaniya.com, which is oowomaniya.com. So check the website and get help. And also, please, if you have liked this interview, click on the like button of the Limelight page and also comment, as your comments are precious to us. So thank you for listening and Allah Hafiz.